अगर आप आज शुरू कर रहे हो तो ट्राई एंड अवॉइड लॉट ऑफ मिस्टेक्स ऑफ द पास्ट. वन ऑफ देम इज मिस्टेक ऑफ ओवर डिवर्सिफिकेशन. तो अगर आप गूगल भी कर लोगे, पढ़ भी लोगे, तो भी आपको दिखेगा कि एक पोर्टफोलियो में कितने नाम होने चाहिए फॉर गुड आउटकम्स. तो जैसा मैंने कहा कि आप अभी आप किस बेस ऑफ नॉलेज से शुरू कर रहे हो, बट सपोज नॉलेज कम है और आप फर्स्ट टाइम शुरू कर रहे हो, तो एक चीज़ जो आसान है वो ये कि कौन ग्रोथ इन्वेस्टर है, कौन वैल्यू की बात करता है. एक ग्रोथ को चुन लो, एक वैल्यू को चुन लो, दोनों में एलोकेशन कर दो. जर्नी शुड बी स्मूथ and overall, because you are owning, so if you choose us on the growth side, you will get, let's say, ballpark 25 to 30 names on the mutual fund side. Choose somebody on a value side, 80 से 100 के नाम मिलेंगे, 120-25 नाम में आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा. The 18 to 21% CAGR is there. It's there in a lot of funds. What you just need to also keep in mind is वो टाइम पे आपका इन्फ्लेशन 6-7-8% था for the majority of the period. This inflation number has come down only the last 2-3 years. So on a relative basis, you were making 18 to 21 minus say 7-8% inflation. I think that number will now come down to a more realistic 12 to 15%, which itself is huge. Yeah, it's absolutely huge if it compounds at that level. Anybody in the global markets, you tell them 10% and above, we will just give you. So from an India perspective, 12 to 15 is huge with a 3%, 4% inflation handle. So net you do make that kind of alpha in that sense, and therefore your wealth grows. So no, I think it will happen. That's my belief. It will definitely happen. Whoever gets in early and plays it out, and he's just structured about his expectations in the right manner, they will benefit.